नहीं नहीं, सारे स्कूल के बच्चे। हाँ वही तो, मतलब सभी स्कूल के बच्चे थे, तो उनसे कोई प्रॉब्लम हुई होगी तभी तो, मतलब ये हुआ ना, तो स्कूल लेवल पे ही हुआ है ना ये झगड़ा, मैं ये कह रहा हूँ। जी जी जी। एक्चुअली असल में हम लोग सऊदी अरेबिया में 23 सितंबर को सऊदी नेशनल डे होता है। ठीक है। तो 19 सितंबर थर्सडे था हम लोग के स्कूल में। तो उस दिन हम लोग के स्कूल में सऊदी नेशनल डे सेलिब्रेट किया जा रहा था। सो क्या बोलते हैं, वही कुछ बच्चे उन लोग स्कूल टाइम के ड्यूरिंग जो स्कूल चल रहा है उसके बीच में उन लोग बाहर जा रहे थे गाड़ी से घूमने सेलिब्रेट करने। तो ये क्लासेस नहीं चल रहे थे, बस ऐसे ही घूमने जा रहे थे उन लोग सारे लोग। तो उन लोग स्कूल के गेट का लॉक खोल के और बाहर जा रहे हैं, वो भी स्कूल के टाइमिंग्स के अंदर। तो मैं भी गया उन लोग के साथ, तो गाड़ी में सीट खत्म हो गई थी तो मैं वापस आया। तो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने मुझे उसने मुझे पकड़ा। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि और कितने लोग, मतलब वही अरबी में बोल रहा था। सो उसने मुझसे पूछा कि और लोग और कौन कौन बाहर गया, मतलब वही सब नाम वाम पूछा। तो मैंने जो जो लोग का नाम लिखा ना पेपर पे, उन लोग के पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया गया। तो उन लोग मुझसे गुस्सा थे। तो अभी ये जो ट्यूसडे और वेडनेसडे गया है ना लास्ट वीक का, इन लोग यही इतने दिन से, क्योंकि संडे मंडे हम लोग की हॉलीडे थी सऊदी नेशनल डे की वजह से। और तो ये लास्ट ट्यूसडे और वेडनेसडे इन लोग इतने दिन से वही ट्राई कर रहे हैं मुझे मारने के लिए। लेकिन 2 दिन मैंने अवॉइड किया क्योंकि मेरा एक कजन भाई 12th में, उसको मैं इन्फॉर्म कर देता तो पहले ही। लेकिन थर्सडे के दिन वो आया नहीं, तो ये सब हो गया। तो अभी हम क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं अभी। हाँ, क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, मैंने कल भी क्लास अटेंड की थी। कोई मसला नहीं। Okay, so we have completed our cash book in previous class. The single column, double column, and petty cash book. We have already completed all these three. Yes. यस सर। सर आई हैव अ डाउट एक्चुअली। Okay. मैं जब घर में प्रैक्टिस करता हूँ ना तो मुझसे हो जाता है। लेकिन जब अकाउंट्स का एग्जाम में लिखता हूँ ना तब मुझसे नहीं हो पाता। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। जैसे जर्नल एंट्रीज में कोई बैड डेट्स की एंट्री आ गई ना, या उसकी एंट्री आ गई क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन की, तो दोनों का जब मैं परसेंटेज कैलकुलेट करके अमाउंट करेक्ट अमाउंट चाहता हूँ मैं, सही अमाउंट मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता हूँ। हमेशा ऐसा मेरे साथ होता है। घर में प्रैक्टिस करता हूँ मैं तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन रहते हो जाता है। अब जो उसमें आता है क्वेश्चन पेपर में वो हो ही नहीं पाता है। मेरे पास क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है अभी। आप चाहे तो मैं क्वेश्चन बताऊं आपको, मतलब बताइए। जर्नल एंट्री बताऊं। एक सेकेंड सर। ये देखिए, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ ये था। Charge depreciation at 15 percentage per annum for 2 months on machinery costing 1,40,000 Charge depreciation. at, Machinery cost 1,40,000, yes, and depreciation rate is 15% per annum for 2 months. okay. So the simple formula, as you remember, the formula for simple interest was principal into a rate into time divided by 100 into 12 or 365. You remember this formula? सर आपने यही फॉर्मूला बताया तो लाइक थोड़ा डिवाइडेड था। इट वाज लाइक प्रिंसिपल इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम बाय 12, लाइक जितने मंथ्स है बाय 12 ऐसा। Yes. So when we use the formula for depreciation, this is just cost of assets or the book value of asset. So cost of asset is 1,40,000. यस सर। Rate is 15% and time is 2 months. So 15% means 15 by 100 and 2 months means 2 by 12. That's it.
It is 3,500. सर ये आपको 15, आपने 15 को 5 से किससे कट किया? 3:5 and ओके 3:4. You don't have to cut all these, just one. Okay, you don't have to cut all these, just multiply and divide. So it will be that's it. तो ऐसे सुनने में समझने में तो आसान लगता है, जब स्कूल में क्वेश्चन आता है ना तो फिर सॉल्व नहीं होता, तो पता नहीं क्यों क्या रहता है। ऐसे घर में तो करता हूँ, अमाउंट भी करेक्ट आता है। कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, मतलब अगर कॉन्सेप्चुअली कोई प्रॉब्लम हो तो समझ में आता है, बट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम। यही एरिया में स्टक होता हूँ मैं, ये जो अभी आपने किया ना, परसेंटेज कैलकुलेट करना, इसी में स्टक होता हूँ मैं। तो इसका तो सिंपल है कि तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। अगर एक दो क्वेश्चन करके जाओगे तो डाउट रहेगा कि गलत तो नहीं कर रहा हूँ, और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन अब जैसे मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मैंने 1,40,000 इंटू 15 इंटू 2 किया। ठीक है, मैंने उसका अमाउंट भी लिख दिया 42 लाख। कैलकुलेशन इज बिग, इट इज नॉट स्मॉल, बट आई एम कॉन्फिडेंट, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन 42 लाख without hesitating. So this is what you have to do. If you practice uh, 10, 12 question related to any topic, then you'll have confidence related to the topic. So 1,40,000 into 15 into 2. So you can say 15 into 2 is 30, and 14 into 3, 30, I have removed 0. So 14 into 3, 42, and 40 here, and 10 of 30. So 1, 2, 3, 4, 5, 50. So 42 lakh divided by 1,200. Now you can do this. Then you'll get again 3,500. So calculation is, you have to think that how the amount will be calculated easily, because यस सर। you will not get very simple call calculation all the time. You have यस to. सर, एंड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल of rupees 5 lakh at 9% per annum for 6 months. Again 5 lakh, 9% means 9 by 100, and for 6 months 6 by 12. So first of all, this, and okay, you can use this shortcut also, 5 lakh into 9%. So percent, whenever there is percent, just remove 20 from here. Now it is 5,000. 5,000 into 9, it is 45,000. And for 6 months, so divided by 2, 22,500. और अगर जैसे कोई और वो मंथ रहा, फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ 6 इट्स लाइक 7 month 8 month ऐसा, तो Then it will be in point. In that case, we have to calculate it separately. Whenever the amount is whole, then calculation is easy. Like in this case,
you are saying that it is 6 months. So divided by 2, I have done. If it is शायद 7, मुझे if it is 7 months, शायद then yes you cannot do this. yes sir. So that's why it is difficult then. In that case, you have to do the calculation separately on your own. Yes sir. If it So is again, if it is 3 by 12, let's say, then again you will divide it by 4. So it will be 11,250. and what if it's 9 or 12? 9 by 12, Yeah, 9 or 12. 9 9 months months, or 12 months. yes. 9 So months or if it 12 is months. 12 month, then this will be answer 45,000. If it is 9 month, then again this is it. कैसे? For 6 months, I have calculated interest of 22,500. Yes. Okay. And for 3 months, it is 11,250. Yes sir. हाँ So, हाँ उसका exactly half है ये वैसे भी yes. 22,000. Actually, these calculation is not given anywhere how I am calculating these. Okay. When you practice more and more, then you develop your own concept like this. सर आप प्रो है सर. प्रो जैसा कुछ नहीं होता है, सब प्रैक्टिस का खेल है. तुम भी करोगे, तुम भी प्रो बन जाओगे. गेम तो चल कि बहुत ज्यादा खेलेंगे. अब ऐसी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें कि वो हो नहीं पाती है. जैसे अब मैं भी कभी कभी गेम खेलता हूँ, जैसे कि पबजी तुम लोग खेलते होगे, तो खेल Okay. मैंने बहुत टाइम खेला, बट कभी ऐसा कॉन्सेप्ट वो हुआ नहीं कि मैं प्रो हो गया हूँ. मैं जाता हूँ, अगर सामने वाला बंदा थोड़ा ढीला है तो मैं उसको मार दूंगा. अगर वो थोड़ा भी अच्छा है तो वो मुझे निपटा देता है. सिंपल. तो मैं बहुत दिन नहीं खेला, बट ऐसा होता है तो नॉर्मल चीज है. अब उन सब चीजों में मैं प्रो हो नहीं सकता, लेकिन इसमें तुम हो सकते हो. तुम्हारा समय है, तुम हो सकते फिर हो. उसमें भी प्रैक्टिस चाहिए होती है. नहीं, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन उसमें मैं बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो संभव नहीं है. उतना ज्यादा क्विक मूवमेंट हो नहीं पाता है, तो इसलिए हम्म. अब उनको देखता हूँ सही मैं कि है. वो तो करते रहते हैं और गोली चलाते रहते हैं, तो वो बहुत आसान हो जाता है उनके लिए. मेरे लिए नहीं. तो So, sir, ऐसे I think I'm not sure. I do not remember exactly, but शायद 6 months का ये जो है ना इंटरेस्ट वाला, शायद मुझे 22,500 आया था. आई एम नॉट श्योर बट ऐसे ही कुछ अमाउंट था. दैट इज करेक्ट. लेकिन ये जो है ना जो डेप्रिसिएशन वाला है ना ये मेरा पक्का रॉन्ग गया पक्का. सो मतलब प्रॉब्लम कैलकुलेशन में ग्रिप की है वही कि आपका पकड़ नहीं बन पा रहा है. So the thing is, you need to practice more. You have to develop your own calculation technique, because the normal technique will not be uh, cannot be used all the time, because it will lengthy. Like if you are dividing something with some amount, then you'll do Yes. like this. Let's say 30,750. I'm taking one easy one. So let's say you are doing with 5. So you will do like this, yes? Yes. But how it will be easy? Because first of all, whenever I calculate something, I remove this part from calculation and then put it later, Okay. all the time. Yeah, like in percentage, I told you, for percentage, I have removed 20, because for percentage, if it's 9%, then it will be 9 by 100. So 20. That's why I removed directly 20. Yes, sir.
अच्छा सर, मुझे एक डाउट था। ये जर्नल एंट्री का ही क्वेश्चन था हम लोग का एग्जाम में। सो लाइक आपने बैड डेट्स रिकवर्ड की जो एंट्री बताई थी आपने, इट्स लाइक क्योंकि बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री ये बिकॉज यू सेड कि जो बैड जो जो डेटर था हम लोग का, उसका हम लोग नाम जर्नल एंट्री से हटा देते हैं, राइट? सो यू सेड वो हम लोग के लिए फिर इनकम की तरह वर्क करेगा, जो उसने नहीं, वापस जो इनकम नहीं, रीपे किया। वो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन जाएगी। हाँ, यही आपने बताया था। तो जो क्या बोलते हैं उसकी एंट्री आपने ये बताई थी कि वो होगा ना, कैश इट विल अकाउंट बी डेबिट टू कैश बैड अकाउंट। डेट्स रिकवर्ड। हाँ, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैलेंस रिकवर्ड अकाउंट। सो लेकिन हम लोग को ये अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ₹1000 ड्यू फ्रॉम सैम रिटन ऑफ एज बैड डेट्स, नाउ रिसीव्ड ₹800 फ्रॉम हिम। सो ये क्वेश्चन था। तो वही सेम कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, लेकिन जर्नल बैड एंट्री में डेट्स दोनों रिकवर्ड। अमाउंट। हाँ, लेकिन जर्नल एंट्री में क्रेडिट और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल रहेगा ना। और बगैर कोई जर्नल एंट्री के मैं कोई अमाउंट डाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि 200 तो बैड डेट्स है वैसे भी, जो हम लोग को नहीं मिले। 1000 थे टोटल में, तो 800 मिल गए, 200 नहीं मिले ना। सो आई रो इन द एग्जाम आई रोट कैश अकाउंट डेबिट 800 on the debit side, then I wrote bad debts account debit 200 on the debit side, then I wrote to Sam account 1000 दिस इज द एंट्री। कैश अकाउंट। लेकिन सर अमाउंट तो हम लोग की 1000 थी ना, 1000 ड्यू थी। 1000 हमने रिटर्न ऑफ किया था, तो वो एंट्री तो ऑलरेडी हो चुका है ना, हमने तो बुक से हटा दिया उसको। अब उससे क्या लेना देना, अब तो जितना पैसा हमें आ रहा है हम उसकी एंट्री करेंगे बस। हमको वो पीछे हमने क्या किया, पिछले साल हमने क्या किया, उसे क्या लेना देना अभी। अरे यार। तो ऑलरेडी हटा चुके हैं ना हम अपनी बुक से। अच्छा, मैं इसी को यही इसी जर्नल एंट्री के लिए बहुत कंफ्यूज था मैं। तो मैंने सोचा जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मैं वो ये एंट्री डाल के करूँ। द थिंग इज, एक्चुअली द कंफ्यूजन इज फॉर क्वेश्चन, लाइक इट इज गिवन। सो amount received from Sam 800, which was previously written off uh, यस 1000. यस। Yes. So now it is recovered 800. So 1000 was written off. So we have done the entry of 1000 in the past. So we have already removed it from our book. So there is no trace of that 1000 in our books. Yes or no? यस सर। So if there is no trace, then why you are equating 800 with 1000? Now, this 800 is your income because you are recovering this amount. So what was your loss in the past will not impact your income in current year. यस सर। So cash account debit to bad debts recovered 800. चलो, आई होप टीचर मार्क्स दे दे। ऐसे में थोड़े ना देगा मार्क्स, अगर ऐसी नहीं, गलती करे तो वो काट ही देगा। कभी कभी वो सही से नोटिस नहीं करती हैं तो दे देती हैं, और मैं उनको रिमाइंड भी नहीं करूंगा। सही से नोटिस, हाँ, अगर फास्ट में क्वेश्चन चेक करेंगी तो। हाँ, क्योंकि ज्यादा बच्चों के पेपर्स है ना, अराउंड 30-40। यस। ओके, सो एक्चुअली there is any doubt in cash book part? कैश बुक। Yes, because the previous concept we were discussing was cash book, single column या or petty cash book. मुझे स्पेसिफिकली डाउट नहीं है, बट लाइक मैंने क्वेश्चंस सॉल्व नहीं किए ज्यादा कैश बुक के, सिंगल कॉलम डबल कॉलम। तो अभी क्वेश्चन करना चाहते हो तुम? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट।
सर एक वो आया था, हम लोग इसमें ये भी आया था पेटी कैश बुक का। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन पेटी कैश बुक ऑन December 30, 2023 विद एन इम्प्रेस्ड अमाउंट ऑफ 2500। और वही जो मैं आपको एंट्रीज बता देता हूँ। तो मैंने जैसा किया था, वही कॉलमर कैश बुक थी ना ये, तो मैंने वो बनाया। एंड देन अमाउंट सबके, लाइक इट वाज December 7 स्टेशनरी 480, then December 12 cartage का 260, 22 taxi fare, What is the uh, amount of total expenses? total expenses, let me calculate again. It was, oh, okay, tell me amount, I will calculate. You will take time. 480, 120, No, it was 480 plus 260 plus 260 or 60? 260, 260 Okay. plus, yeah, plus 480 again, then 400, then 105, then 165. It come up to 1890. 1890. Yes, sir. So like this, you will calculate. हाँ, और वही जो रिमेनिंग कॉलम्स थे एक एक एसेट के, वही सब वो ड्रॉ करके उसके नीचे उसके स्पेसिफिक अमाउंट लिख दिए मैंने। और ये कैलकुलेट कर दिए बाय बैलेंस, हाँ 610 यही आया था शायद। वेट, 2500। This हाँ is, हाँ six, so you will get full marks in this. हाँ ये तो पक्का है ये तो। और सर मैं एग्जाम से पहले एक भी पेटी कैश फ्लो का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं गया था। खाली फॉर्मेट याद था, बस वो कर दिया और ये अमाउंट भी करेक्ट। ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ना के बराबर करते नहीं सर, टाइम नहीं मिला ना मुझे, मैं और दूसरी चीज प्रैक्टिस करता हूँ। हैं। एग्जामिनेशन में जो चीजें पढ़ के मतलब जाना चाहिए, वो चीजें तो प्रैक्टिस कीजिए कम से कम। जी सर। सर एक सेकंड, हाँ। यस। अ, हाँ सर, एक क्वेश्चन था, इसमें मुझे कंफ्यूजन था और दूसरे लोगों को भी मतलब कंफ्यूजन था, मतलब एमसीक्यू था ये। बट मैं बताता हूँ। Anil, the petty cashier of Ebony, has an interest of rupees 5,000, out of which he pays for petty expenses. He submits the details of payments every 15 days, which is reimbursed to him. He submitted the details for 15 days that ended on 15th April 2012, amounting to rupees 4,900. How much amount should be paid to him? A rupees 4,900, B rupees 5,000, C rupees 2,200 and D 7,100। तो अब जितना मैंने ऐसे सोच के वो डाला कि अब जितना एक्सपेंस हुआ है उतना ही अमाउंट वापस रीइंबर्स होगा ना। 5,000 का इंटरेस्ट अमाउंट है और 4,900 एक्सपेंस हुआ है 15 दिन में, तो उतना ही वापस मिलेगा ना 4,900। यस। तो मैंने ए डाला 4,900। ओके। क्या क्या ऑप्शंस थे, कैन यू रिपीट? 4,900, then 5,000, 2,200, 7,100। तो ये सी और डी तो एकदम वो थे, और थे एकदम और। ये ए Yes. और बी में तो In confusion Impress था। system, you receive only the amount that you have expensed. यस। So 4,900, because you have only 100 left. So 4,900 is the हम्म। impress. वही मैंने वो भी सोचा कि बैलेंस 100 है, शायद बैलेंस के हिसाब से मिल सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस एकदम अलग थे, तो फिर मैंने सोचा 4,900 डालता हूँ। Is there any other information in the question, or that's it? नो, दिस इज द क्वेश्चन। Can you ये repeat एमसीक्यू the line क्वेश्चन again? था। ओके।
Anil, the petty cashier of Ebony, has an imprest of rupees 5,000, out of which he pays for petty expenses. He submits the details of payments every 15 days, which is reimbursed to him. He submitted the details for 15 days that ended on 15th April 2012, amounting to rupees 4,900. How much amount should be paid to him? Yes, it will be 4,009. हाँ, वही बहुत बच्चों ने 5,000 डाला, तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है। Okay. हाँ, 5,000 is not correct because I told you there is two system. One is Pvt Impress system and the second is the simple one where you expense all money and then you go back to the main cashier and he reimburse you the amount. Different amount. yes, Not always the same. So he can reimburse any amount. So in that case, any of these option can be true in first case. But in under impress system, uh, the amount of expenditure is reimbursed. yes. और सर तो एक था, ये 3 मार्क का क्वेश्चन था, बट 3 मार्क के हिसाब से बहुत इजी था, बट मुझे कंफ्यूजन था कि सो मैंने एक अपने फ्रेंड से पूछ लेते, उसने बता दिया, बट मुझे कंफर्म करना था आपसे। लाइक डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर एसेट्स स्लैश लायबिलिटीज स्लैश रेवेन्यूज स्लैश एक्सपेंसेस और नन ऑफ दीज। सो एक है सेल्स, बी क्रेडिटर्स, बिल्डिंग, लोन, सैलरी, रेंट रिसीव्ड, ये सब है। तो सेल्स सर, सेल्स एसेट तो नहीं है, मुझे मालूम है। Income sales. लाइबिलिटी, हाँ, तो वही बेसिकली Just इनकम या रेवेन्यू, 1 minute. इनकम या रेवेन्यू, व्हाट्स 1 minute. ओके सर। Yes. So you were saying about what is your question? Can you? डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर एसेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस और नन ऑफ दीज। Okay. सो Tell पहला me, I ऑप्शन guess one by one. Sale, या sale, सेल्स। income, or you can say हाँ, revenue. हाँ, तो मैंने सेल्स का रेवेन्यू डाला। फिर क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स ऑब्वियसली लाइबिलिटीज है, क्योंकि Yes. हमको पे करना है, तो क्रेडिटर्स को मैंने लाइबिलिटीज डाला। Yes. अब बिल्डिंग, बिल्डिंग ऑब्वियसली एसेट है, तो मैंने एसेट डाला। It is also correct. एंड देन फिर लोन, हम लोग का लोन, लोन भी ऑब्वियसली लाइबिलिटी है, क्योंकि हम लोग को पे करना है। Yes. एंड देन सैलरी, सैलरी हम लोग के एक्सपेंस है, सो मैंने एक्सपेंसेस डाला। और रेंट रिसीव्ड, ये भी या तो इनकम की तरह हम लोग ले सकते हैं, Yes. अगर जैसे इसमें स्पेसिफिकली लिखा होता है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस या वो रेंट एक्रूड वैसा, तो फिर और अलग ऑप्शन होता, बट ये खाली रेंट रिसीव्ड है तो इनकम में आएगा, तो मैंने Yes. रेवेन्यू डाल दिया। अगर रेंट रिसीव्ड इन एडवांस होता तो लाइबिलिटी होती। Yes. हाँ, तो मैंने रेंट रिसीव्ड का यही डाला, रेवेन्यू डाला। Very good. सही है, सही। सर वन लास्ट क्वेश्चन, ये कहता था
ये हाँ, ये भी 1 मार्क है नहीं। आज का अपना पूरा क्लास ऐसे ही गया है, कुछ हमने एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं है, बट चलो ठीक है। चलता है, एक दिन डिस्कशन में भी जाना चाहिए। हाँ, इसीलिए। Read the following hypothetical situation. Answer question number 19 and 20 based on that. Mr. Suman, dealing in electronic goods, sold 20 TV sets costing 20,000 rupees each at 30,000 each. Just यानी one कि हर टीवी पे 10,000 का प्रॉफिट था. Out of this, rupees 5 lakh were just received in 1 minute, cash. 1 minute. Yeah, Yes, sir, yes, sir, sorry. each. Okay. After that, 20,000 each. And sold at 30,000 each. Costing at 20,000 each, sold at 30,000 each. Okay. Then out of this, yeah, out of this, rupees 5 lakh were received in cash and the balance is not yet received. State the answer of the following. Amount of revenue, यानी कि total sales. तो obviously 20,000 से करेंगे नहीं, 30,000 आया amount. So 30,000 into 20 is 6 lakh, right? Yes. हाँ, तो मैंने ये डाला, मतलब अमाउंट ऑफ रेवेन्यू हम लोग को 4 ऑप्शन है, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख या 7 लाख. तो मैंने वो डाला 6 लाख. एंड देन ये था अमाउंट ऑफ डेटर 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 6 लाख. तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5,000 is already received in cash ना, and the balance is not yet received. So the balance will be 1 lakh. Amount of debtor 1 lakh. Yes, I have written this. Okay. सही है. यानी कि ये सब सही गए, बस जर्नल एंट्री में डिप्रिसिएशन वाला गलत गया मेरा, एक एंट्री. Okay, what is the entry you have passed फॉर जर्नल वन. for the appreciation? Yes. नहीं, एंट्री तो मेरी सही है, मेरा खाली अमाउंट गलत गया. Entry क्या किया है? क्वेश्चन ये था ना, चार्ज डेप्रिसिएशन एट 15% फॉर टू ऑन मशीनरी. तो मैंने वो डाला, क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. और नरेशन में वो डाला मैंने, क्या बोलते हैं, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन Okay. मशीनरी. Yes, entry is correct, but the हाँ calculation part is. हाँ, वही बस अमाउंट गलत. Done? यस सर. Actually, ना, there is only 10, 15 minutes left. सर So, एग्जैक्ट 15 मिनट्स. yes. So, in that time, I will not be able to complete any one topic. So, let's say purchase book. यस सर. So, purchase book is part of subsidiary book, or you can say a special purpose book, which is prepared to record credit purchase only. Okay, credit purchase only and not the cash one. अच्छा सर, कैश बुक में खाली कैश की ट्रांजैक्शंस वो होती है ना. हाँ, तो actually the situation is these subsidiary book is bifurcation, or you can say classification of journal. Okay, it is not ledger, it is classification of journal. यस सर. So journal is divided into
Purchase book, purchase return, Okay. sales, Purchase sales book, return. purchase return book, sales book. So there is total 8 books that we prepared. Journal is divided into these 8 books. So in journal, we pass entry only one time. Yes. Yes, sir. And not at 2 places, just one entry for every transaction. Now, in ledger, we record one entry at 2 or more places, 2 or more accounts, you can say. So, like if the journal entry is purchase account debit to cash, then it will go to purchase account and also in cash account. So in ledger, we write every entry in 2 or more accounts. But in these books are part of journal. That's why only one entry for every transaction, only one entry at one place only. That's why anything that is recorded in cash book will not go to purchase book. Anything which is recorded in purchase book will not go in any other book. Okay. So that's why cash purchase is already recorded in cash book and it will not go in purchase book. Cash Mm, purchase. In the same manner, cash sale will also be recorded in cash book and not in the sales book. yes, sir. No, Okay. वही question, so that's why I was confused. Like, which of the following is entered in cash book? Only cash transactions, only credit transactions, both cash and credit, or none of these? Okay. There is one more thing that is important in this books, proper journal, or you can say uh, main journal. Okay. So it is prepared in the same manner as we solve the journal entry, as we prepare the journal entry. But the thing is, we don't record all the transaction in proper journal. Transaction which are not recorded in any of the previous books will be recorded in proper journal, like transaction which is not related to purchase of goods, which is not related to sales of goods, which is not related to purchase return, sales return, which is not related to cash flow, will be recorded in purchase proper journal. Can you tell me the transaction which cannot be categorized under any of these books, other books? Um, well, I'm not actually sure. Okay. First of all, we cannot record any cash transaction in proper journal because it will go to cash flow. Okay. Yes, sir. So transaction should be on credit basis. Now, if we purchase goods on credit basis, then it will go in purchase book. But what if we purchase assets on credit basis? Like machinery. So if you purchase machinery on credit basis, then it cannot, or it will not go to cash book and also not to purchase book. Yes, sir. Same thing applicable on sale of assets on credit or depreciation on assets. Depreciation cannot go in cash book or any other book. So it is also proper journal. Okay, okay. Bad dates. Bad it's okay. And then I got accidents So like these are the invested in invested shares, entries. Yes. investment. No, investment in shares. If you're paying cash, then it will go in cash. Okay. What if नहीं अच्छा हाँ इन्वेस्ट तो like credit में कर ही नहीं सकते so Okay. So these are the separate journal entries, single journal entries. There are some group entries also. That is called like opening entry, closing entry, transfer entries. so what is the last step of accounting as a process of information?
What is the last step of accounting? As a process of information. Analysis and interpretation is done, okay, after the result, and then it is communicated Oh. to the state. Actually ये था recording of data in the books of accounts, preparation of summaries in the form of financial statement, communication of information, analysis and interpretation of information. ये चार ऑप्शन थे. ओके, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के साथ कम्युनिकेशन ये भी था. तब कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि कुछ जगहों पे ये माना जाता है कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इज द लास्ट पार्ट, बट कुछ जगहों पे ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन. उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पता चल जाएगा. बट अगर चारों ऑप्शन थे तो कम्युनिकेशन ही लास्ट ऑप्शन. अरे एक्सप्लेन यार. कर देता हूँ कैसे. क्योंकि अगर बिजनेस कोई इंडिविजुअल ऑपरेट कर रहा है, मतलब कोई छोटे लेवल का व्यवसाय है, बिजनेस है, जो कि वो चला भी रहा है और उसका मालिक भी है, ओनर भी है, तो इन दैट केस देयर इज नो कम्युनिकेशन नीडेड. यस सर. In this case, analysis and interpretation will be the last process. ये But जो मैंने कुछ नहीं बताया अभी. analysis and interpretation. And जो अगर मैंने कंपनी है जिसमें मैनेजमेंट कोई और संभाल रहा है, ओनरशिप किसी और की है, in that case communication, because management will find out the profit and loss and then he will communicate to the owner. ओके बट सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है. तो कम्युनिकेशन, मैंने बोला तो कि अगर चारों ऑप्शन दिए हुए हैं तो कम्युनिकेशन द लास्ट. सर एक क्वेश्चन में मैं एकदम बहुत कंफ्यूज था, मतलब एकदम समझ ही में नहीं आया क्योंकि नोटबुक्स में भी नहीं था आई गेस. यूज ऑफ कॉमन सॉरी सर, use of common unit of measurement and common format of reporting promotes comparability, understandability, relevance और reliability. ये चार में से कोई एक. नहीं, मुझे लगा कि आप क्वेश्चन में ही सब कुछ बोल रहे हैं. फिर से एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन. क्वेश्चन बोलने के बाद फिर ऑप्शन के टाइम पे बता दिया कीजिए कि ये चारों ऑप्शंस है. जी. So use of common unit of measurement and common format of reporting promotes option A comparability. जस्ट वन कॉमन रिपोर्टिंग फॉर्मेट. नहीं, use of common unit of measurement and common format of reporting promotes मतलब क्या promote करता है? A comparability, B understandability, C relevance या D reliability. अगर कॉमन यूनिट हम यूज कर रहे हैं और वो इस चीज को प्रमोट करता है. ओके, फर्स्ट थिंग इज कंपैरेबिलिटी. Reliability is not the option. Second one you said, second option. Comparability फिर second option understandability. Compatibility.